Good morning, sir. Yes, good morning. Thanks, sir. So, I'm going to start the new topic today. Am I audible clearly? Yes, sir. Sir, your voice is breaking, sir. So maybe there is some network issue. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा नेटवर्क इशू है. नेटवर्क में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है अभी. Okay, so let me share the whiteboard first. Is the whiteboard visible? Yes, sir. Okay. So we are just going to cover the conversion of flip-flop. Okay, so conversion of flip-flop from one flip-flop to another flip-flop. Okay, and also okay, so instead of going through that, firstly I want to show you the excitation table. Okay, so what is the excitation table? Let us know. So we already have gone through the truth table of the flip-flops, which are basically used. Okay, so here we are interested to find the characteristic table. So what is mean by characteristic table or the excitation table? So okay. Excitation table. Okay, so previously what we have seen is the truth table of the flip-flop, or you can say it the present state or present state next state table. Okay, so let us draw the present state next state table. So एक्साइटेशन टेबल हमारे पास जो हमने पहले देखा वो हमने क्या देखा था, लाइक अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वी हैव द नेक्स्ट स्टेट फॉर सम पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट. ओके, सो मैं पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट में अभी नहीं लिख रहा हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग in the case when j and k both are 0 0, the next state will be equal to the present state. Okay, for 0 1 it is 0, the next state will be 0. For jk input as 1 0, the next state will be 1 or the set state, and for 1 1 the next state is the complement of present state. Okay, so we have seen this in the last class. So this is the truth table. So here what we have done, here we have given the input, we have given the inputs,
and based upon that we are getting the output. Okay, but now there is a case when we want the particular output. Okay, like so if we have the present state and we also have the next state. Okay, मुझे ये next state चाहिए. So based upon that, what should be the input conditions? Okay, are you getting that? Previously what we have? Previously we have the inputs, and based upon the combination of input we are getting the outputs. But here what we want? We don't want the we want the some particular output. Okay, we have some particular input and we want some particular output. So for what possible combinations of input we want some okay, so we have, so in this case previously we have the output, means हम ये output चाहते हैं. So इस आउटपुट के लिए इनपुट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये जो चीज बताता है, दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन टेबल. ओके, सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल. एक्साइटेशन टेबल. ओके, सो यहां पर भी हमें क्या करना है अभी. सो एक्साइटेशन टेबल जानने के लिए पहले यू शुड नो द प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल ऑफ एनी फ्लिप फ्लॉप. ओके, किसी का भी अगर आपको एक्साइटेशन टेबल जानना है तो उसके लिए आपको उसका प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल जानना होगा. तो चलो हम एक एग्जांपल, हमने जे और के का ही शुरू किया तो हम जे के का ही एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करेंगे. सो एक्साइटेशन टेबल क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्या, प्रेजेंट स्टेट. सो वी आर डिनोटिंग द प्रेजेंट स्टेट एज Q1 and the values of J and K, the inputs, and we want the output or the next state. Okay, so this is the present state, this is the next state which we want. Okay, so if we have 3 input combinations, so how many combinations will be there? अगर हमारे पास 3 इनपुट्स है तो इनके कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे? Am I audible? 8, sir. Yes. Okay. So if we have 3 input variables are there, then the number of possible combinations will be 8, sir. 8. So okay, let me draw 8 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, so here we will have 8 possible combinations, and the combinations are 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okay, so if we have 3 variables are there, then we can either we can write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 binary of these, or we can write it in an easy way by this. Okay, 2 zeros, then 2 ones, then 2 zeros, then 2 ones. Again here there will be 4 zeros, then 4 ones. Okay, so in this way you can draw the truth table very easily. Now we have the present state and the inputs J and K values are there. So we, for these particular combination, we want the next state. Okay, so the next state will be, so in the case when J and K both are 0, 0, what we know? In the case when J and K both are 0, 0, what is the value of the next state? Here we have given Present state. Okay, so next state will be equal to the present state. So whatever be the, so यहाँ पर present state क्या था? For this particular case, present state क्या है? कितना है present state? 0, sir. 0. 0.
So the next state will be equal to 0. क्यों? क्योंकि ये जो हम यहाँ देख रहे हैं for 0 0 we have the present state equal to next state will be equal to the present state. तो present state यहाँ पर 0 है, इसलिए next state का value भी हमने यहाँ 0 लिखा है. ठीक है. Next, in the case when j k inputs are 0 and 1, j is 1 0 and k is 1. So for this case, what will be the output? 0, sir. Okay, so here we can see that for whenever j is equal to 0 and k is equal to 1, always we have a value as 0. Means जो next state होगा वो हमेशा 0 होगा, present state कुछ भी हो. Okay, so present state यहाँ पर 0 है, next state will be equal to 0. In the next case, we have j is equal to 1 and k is equal to 0. So what will be the output in this case? Always 1, sir. Have this combination is there. So for 1 0 we have the value will be always equal, next state will be always equal to 1. So next state will be equal to 1 whatever be the present state. Okay, present state तो यहाँ पर 0 है, but अगर j का value 1 है और k का value 0 है तो हमें 1 ही मिलेगा. Okay, next we have 1 1. So for the case when jk is equal to 1 1, what will be the output or what will be the next state? The complement of present is 4. So what is the present state here? 0. 0. Zero. So output will be the next state will be equal to 1. Why? Because in this case of jk is equal to 1 1, we have the next state will be equal to the complement of the present state. Okay, so 0 is the present state, so the next state will be equal to the complement of this 0, that is 1. Okay, so again for 0 0, jk is equal to 0 0. So what will be the next state here? Present state. So what will be the value here? 1. The 1 as the output or the next state. Next, please tell me what I should fill here. What I should fill here, please tell me. 0. 0. Good. Then next, here. 1 1 1 Okay, very good. 1 0. So here it is 0. 0, sir. Okay, so here we have the jk inputs are 1 1 and present state is equal to 1. So the next state will be equal to the complement of the present state, that is 0. Okay, so here we have created the present state next state table of the jk flip flop. Okay, so it is the PS stands for present state. And NS here stands for next state. Okay. Now what we want here, we want to make the excitation table. So excitation table, I have already told you that we want to create excitation table. So in excitation table, what we know all previously we know the present state as well as the next state. Okay, so these should be the inputs and the output will be J and K. So हमने J और K excitation inputs चाहिए for these possible combination of present and next state. So here at the input we have two variables. So obviously, what should be, how many should be the number of combinations here? 4. 4 combinations. So 1, 2, 3, and 4. Okay, the 4 possible combinations will be there. यहाँ पर हम अगर देखें तो we should have so here we will have the combination as 0 0, 0 1,
1 0 and 1 1. So only these may be the combinations. Next, for this combination, that is for present state 0 and next state should be also equal to 0. Okay, so we already have the present state next state table. Okay, so where we are getting the next state as 0, in which conditions we are getting the next state as 0. In which case we are getting the next state as 0. So are you getting that? We have the present state, 0 1. we have the next state. Okay, so in the case the next state will be equal to 0, where we are getting the next state. So present state, next state, we are getting 0 here, 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 and here. Okay, but in this case the present state will be equal to the next state. Okay, so present state will be equal to next state. हमें कहाँ मिल रहा है? J और K 0 0 वाले केस में. ठीक है, तो हमें एक केस मिल रहा है J के जब 0 0 हो तब हमें मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है क्या? 0 1 पे 0 1. नेक्स्ट स्टेट 0 मिल रहा है और प्रेजेंट स्टेट भी 0 है. हम यहाँ पर देख सकते हैं दो केसेस में, एक 0 0 वाले कंडीशन में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 0 है, और इस कंडीशन में भी सेकंड वाले जब J और K का वैल्यू 0 1 है. ओके, सो अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू J का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और K का वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. ओके, सो अगर हम इसे कंबाइन करके लिखें तो वी विल हैव, ओके, सो आई हैव टू इरेज दैट. सो हमने जो वैल्यूज देखा, हमने देखा कि जेके के वैल्यू के लिए 0 0 के लिए भी हमें ये कॉम्बिनेशन मिलता है, प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, और एक कॉम्बिनेशन 0 1 के लिए मिलता है, मतलब J 0 हो और K 1 हो, और इसको जो हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वी कैन राइट एज J as 0 and K don't care. Okay, are you getting that? Yes sir. Now next case, the present state is 0 and next state is equal to 1. So in which conditions we are getting that? Present state, Third and fourth. present state 0, Okay. next state 1, and where? Fourth Present state. 1 0 और 1 1 पे. प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 1. तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर जब हम देखेंगे तो वी हैव K is equal to either 0 or 1, but J should be equal to 1. Okay, 1. so Yes, J sir. should be equal to 1 and don't care about the value of K. Okay, now in the next case 1 0, present state is 1 and next state is 0. K का वैल्यू 1 Okay. और Present J का state don't 1 and next state is 0. और कहाँ मिल रहा है? लास्ट वाला में. Present state is 1 and next state is 0. Okay, in green color. 0 1 और 1 1 पे. So in this case, what you can see that here we have J value 0, here J value 1, here K value 1, and here also K value 1. Means the K value should be equal to 1, 1. but J we don't care. Means J का value either 0 हो या 1 हो, अगर ये combination हम दे रहे हैं तो हमें यही particular output मिलेगा. Means present state अगर 1 हो तो next state 0 मिलेगा. Okay, next we have 1 1. Next we have 1 1. So present state is 1, next state is also 1. Where we are finding that? Okay, let me change the color. Is yellow color visible?
Yes, sir. Present state 1, next state also 1. Means here in this case, and where 7th. here. Okay, so present state 1 and next state will also be equal to 1. So what should be the combination of J and K? In this case, we can see that K value is 0, 0. but J value may be 0 or 1. Either 0. Okay, so J value can be 0 or 1 and K value should be 1. Okay, 0. 0. 0, sir. oh, sorry, it is 0. K value should be 0. So this is the thing what is known as the excitation table. So I think all of you can understand that what is truth table and what is the Excitation table. table or the basic truth table. So in basic truth table, what we are giving in the input, we are giving the input and we are getting the output. But in the excitation table is representing, we already have the possible combination of output and what should be the possible input for getting these combination of output. Okay, so in this way you can design or you can get the excitation table for all of the for all of the flip-flops. Okay, so we will have the number of flip-flops like D, T, JK, SR. So you can get the expression, the excitation table for all of these cases. Okay. Now, we have to convert one flip-flop to another flip-flop. Okay. Flip-flop conversion. Okay. So हमने last day थोड़ा सा discussion किया था that for converting one flip-flop to another flip-flop, we need a next state decoder part. Okay. So in this case, we already know the one flip-flop, that is one flip-flop is given and we have to convert the one flip-flop into another flip-flop. So the very basic block diagram we have drawn, as we have one flip-flop and by using the next state decoder part, we can convert one flip-flop to another flip-flop. Okay, so this is the next state decoder. This is the given flip-flop and we have the next state decoder. So this next state decoder will help to convert one flip-flop to another flip-flop. Okay, so these may connected and it may happen that there will be some feedback from the output of the given flip-flop to the next state decoder part, and obviously we will have some input. Okay, so we will see one flip-flop conversion. So जो कि हमने पहले देख लिया है, but from this conversion we can check it that whatever we have done is correct. Like we have seen D flip-flop. Okay, so D flip-flop is what? D flip-flop क्या था? अगर हमारे पास एक JK flip-flop है, so इस JK flip-flop में अगर इनपुट को क्या कर दिया जाए, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करके दूसरे का इनपुट बना दिया जाए तो ये एक डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है. ओके, सो लेट अस सी दैट हाउ वी कैन डू दिस. सो हियर इट इज अ नॉट गेट. ओके, सो by this technique, by this conversion technique, we can verify this. Okay, so what are these steps for that? There are some particular steps.
which we have to follow while doing conversion of the flip-flop from one flip-flop to another flip-flop. So the very basic or the first step is what? That you should have the present state, next state table for the given flip-flop. Okay, जो भी flip-flop आपके पास दिया हुआ है, what we have, okay, so we want here to convert from the example. We can understand this. Convert or get D flip-flop using JK flip-flop. Convert JK flip-flop to D flip-flop, or realize, or you can write it as realize D flip-flop using JK flip-flop. Okay, so the question may be put in any way. So जो भी फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ रहे हैं या जो भी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्शन करना है आपको पहले उस फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानकारी होनी चाहिए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप यू कैन से दैट the flip flop should be known. मतलब उसका जो भी टेबल है वो ट्रूथ टेबल हो या एक्साइटेशन टेबल हो, that you should know. Okay, so here we will have the JK flip flop, मतलब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे D flip flop के बारे में भी पता होना चाहिए. Then we can do that. The next step is to find out the present state, next state table. आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है D flip flop. ओके, हमें बनाना है D flip flop. तो D flip flop के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर? नेक्स्ट स्टेट, यानी कि जो Q1+1 है, जो भी नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर आना चाहिए D flip flop के अकॉर्डिंग आना चाहिए. So you should have the present state, next state table of the D flip flop. Okay, so firstly, second step, step 2 is to get the present state, next state table for the flip flop which we want to realize. Okay, so we want to realize the flip flop, the D flip flop. Okay, so here I am writing the present state, next state table. So present state is Q1. We will have the D input, and the next state will be equal to Q1+1. Okay, so the present state and the delay input is 0. Present state is 0, delay input is 1. Present state is 1, the delay input is 0. Present state is 1, delay input should be 1. So here in this case, what should be the output? Please tell me, anybody. For the combination of 0 and this D delay input D, what should be the next state? So in delay flip-flop, I already told you, in delay flip-flop, the truth table of delay flip-flop is what? Here I am writing that, the Q1+1. So in the last class, I have already told you that in delay flip-flop, whatever input we will apply, we will get the same output after some delay. If we are applying a input as 1, we will get a 1 at the output. Okay, are you getting that? Am I audible? Sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. So delay flip-flop, are you getting that? कि delay flip-flop क्या है? Delay flip-flop में जो भी input हम apply करते हैं, we will get the same input after some delay.
Okay, already we have seen the truth table of JK flip flop. JK flip flop का जो truth table था उसमें क्या था? We have JK and Q1 plus 1. तो JK flip flop में हमारे पास जो combination था 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay, for this case we will have the present state is equal, next state will be equal to the present state. This is 0, this is 1 and this is Q1 bar. तो हम यहाँ पर डिले फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं. तो डिले फ्लिप फ्लॉप में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब हम 0 यहाँ अप्लाई करेंगे यानी कि डी पर जब 0 देंगे वी विल हैव अ 0 हियर, और यहाँ पर चूंकि नॉट गेट लगा है तो वी विल हैव अ 1 हियर. ये क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. ओके, सो हियर वी विल हैव दिस कॉम्बिनेशन 0 1. तो जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 1 के केस में हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट स्टेट 0 मिलता है. ओके, यानी कि डी पर हमने 0 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट भी हमें 0 ही मिला. Next we will apply 1. So if we will apply 1 at the input, if we will apply 1 at the D input, here we will get 1 and here not get के बाद हमें मिलेगा 0. So अब ये क्या JK input पर 1 और 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? We will get this combination, that is at the output we will get a 1. Okay, I think ये सभी को clear होना चाहिए. तो यहाँ पर हम जो ये ट्रूथ टेबल हमने बनाया है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ पर अगर हम वैल्यू नेक्स्ट स्टेट का पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले रो के लिए क्या आउटपुट पुट करेंगे? नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट here what should I write? 1. 1. Next 0. next 1. 1. ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है और डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा. प्रेजेंट स्टेट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दिस इज जस्ट अ डिले फ्लिप फ्लॉप एंड इट विल प्रोड्यूस अ डिले इन द आउटपुट. whatever input we will get, we will give the output, the same output we will get. Okay, so here we have got the present state next state table. Now the next step is to find out the so हमने यहाँ पर किया क्या है कि हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप नहीं है, but we want the output according to the delay flip flop. Okay, we have the JK flip flop. तो अब ये जो नेक्स्ट स्टेट है हमने जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट निकाला, नाउ दिस नेक्स्ट स्टेट इज बेस्ड अपॉन दिस डी इनपुट बट वी डोंट हैव द डी इनपुट. दैट इज हमारे पास डिले फ्लिप फ्लॉप नहीं है. हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? JK. सो हियर वी विल गेट द एक्साइटेशन इनपुट फॉर J and K. So this is nothing but the excitation input. Excitation input. So what should be the excitation input? ये हम कैसे पता करेंगे? ऑलरेडी हमने अभी यहाँ पर देखा है पीछे कि this is the excitation table for JK flip flop. Are you able to see this? The excitation table of JK flip flop. Yes, sir. Okay, so now we have this present. Okay, I am encircling this known thing. What we have the present state, we have the next state, and now here we want the excitation input for JK. So what should be the combination here? The value of JK. The present state is 0, next state is also 0. So what will the combination of JK? Present state is 0, next 0, state, sir. so 0 and 0 and don't care. don't care. Okay, so we can put here 0 and don't care. Next, for again we have the present state as 0,
नेक्स्ट स्टेट एज 1। तो नेक्स्ट स्टेट हमें 1 कब मिलता है जेके फ्लिप फ्लॉप में? जब जे पे 1 हो, के 0 हो। एक कंडीशन जे 0 और के जे 1 और के 0 हो। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 है, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाला केस है ना। आर यू गेटिंग दैट? प्रेजेंट स्टेट 0 है, Yes, sir. नेक्स्ट स्टेट 1 है। इसका मतलब क्या है? ये हमें आउटपुट कब मिलेगा? जब कॉम्प्लीमेंट वाला केस होगा जेके में। तो जेके में कॉम्प्लीमेंट वाला केस कब होता है? 1-1 के केस में। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? 1 or don't care. 1 and don't care. Next, we have the present state 1, next state 0. So next state 0 मिल रहा है। next state 0 हमें कब मिलता है? जब प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट हो रहा है मतलब जेके 1-1 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेट 0 कब मिलता है? अभी हमने यहां देखा है क्या था? 1-0। ओके, सो 1-0 वाले केस में हमें ये कब मिल रहा था? हमें ये दो केसेस में मिल रहा था। लेट अस सी अगेन। वी हैव 1 and 0। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? 1 और 0। एक ये केस 1-0 और दूसरा वी हैव 1-0 हियर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है। ये कब मिल रहा है हमें? जब j का वैल्यू 0 हो और k का वैल्यू 1 हो। और दूसरा केस में कॉम्प्लीमेंट वाला केस है, मतलब 1-1। सो हियर वी शुड हैव here for 1-1 case and for 0-1 case. So यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? Don't care about j, but the value of k should be 1. Okay. Next, the present state is 1. Next state is also 1. Present state is equal to next state. ये कब मिलेगा? 1 कब मिलता है हमें? जब j का वैल्यू 1 हो और k का वैल्यू 0 हो, तब हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट स्टेट 1 मिलता है। और 1-1 के केस में, यानी प्रेजेंट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट मतलब 0-0, जेके के इस कॉम्बिनेशन के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? k का वैल्यू 0 होना चाहिए और j का वैल्यू क्या होना चाहिए? डोंट केयर। ओके, सो दीज आर दी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर jk. ओके, आर यू गेटिंग दैट? तो अब यहां से अगर हम देखें, अब हम क्या करें? तो सेकंड स्टेप हमने क्या लिखा? टू गेट द प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप व्हिच वी वांट टू रियलाइज। स्टेप 3 was get the excitation input or the excitation table for the flip flop which we already have. And third,